Hi everyone, this is Shivani and I'll be taking your classes for CSAT at the Thastu ICS. And this video is primarily made with the purpose to explain why CSAT is important, what is the strategy that needs to be followed while preparing for this particular paper of the UPSC prelims exam. क्या क्या इसका syllabus होगा, how will we go about it, what should be the approach, what is the weightage of different topics, different portions of CSAT. So this is how we'll go through the entire lecture. So I'll start with this is the CSAT paper that we will be covering. CSAT is Civil Services Aptitude Test. This is the full form of CSAT paper, Civil Services Aptitude Test. This paper is primarily designed to check the aptitude of the aspirants for the civil services, for the duties that they will be performing as the civil servants, bureaucrats. So इसका क्या है, हमारा CSAT जो है that is a part of prelims. Prelims में दो पेपर होते हैं UPSC में, GS1 and GS2. GS1 क्या होता है हमारा, ट्रेडिशनल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, करंट एटसेट्रा. GS2 is Civil Services Aptitude Test. This is the GS1 paper, prelims, GS1 and GS2 is CSAT. CSAT में, see, there are 80 questions. It is objective type. There are 80 questions each of 2.5 marks. हर question 2.5 mark का होता है. A correct answer will give you 2.5 mark. Wrong answer 1/3 marks are deducted. Unattempted answer 0. See, 80 questions. Now what is the importance of this paper? You need to score a minimum of 33% marks in this paper to qualify for so that the GS1 is evaluated. The merit of the prelims is made on the basis of the marks scored in GS1 paper, but for that you need to qualify, you need to score at least 33%, that is 66 marks in this particular paper. इसीलिए CSAT important है. क्यों important है? अगर आपका CSAT qualify नहीं हुआ, आपका GS1 का पेपर will not be evaluated. उससे क्या होगा, आपका मेरिट ही नहीं आएगा, मेरिट में आपका चांस ही नहीं है, बिकॉज इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड. So this is why CSAT is important. क्या होता है, when the aspirants come for the preparation, कई बार क्या होता है, they start preparing for mains. Mains में क्या है, GS and optional. सबसे पहले वो optional prepare करेंगे, then they will go for GS क्योंकि ये common है prelims और mains में. And what do they do? लास्ट के लिए CSAT छोड़ देंगे, कंसीडरिंग कि CSAT तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, बहुत इजीली क्वालिफाई हो सकता है. सो वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन CSAT. बट व्हाट हैपेंस, you are well prepared with all the mains part, the essay part, the optional part, the GS1, 2, 3, 4 of mains. आपने GS1 of prelims भी बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, बट आप CSAT में फॉल्टर कर गए, you could not qualify. And believe me, this has happened with many aspirants. ऐसा होता है. तो क्या होगा, entire attempt gone in vain, entire preparation wasted. So this is why we need to focus. I am not saying that CSAT पे ही सारा focus रखना है, but CSAT को ignore नहीं करना है. With right kind of strategy, right kind of guidance, it is very easy to crack this exam. This paper, qualify in this paper is very easy, considering कि आपने sufficient time इस पे दिया है, under a proper guidance with following a proper strategy. So we'll do. What is the CSAT paper? क्या है CSAT का? What is the pattern of the CSAT exam? I just explained. It is general studies. Paper 2 questions are objective. Both papers are on the same day. Morning में आपका GS1 होगा, evening में second half में आपका GS2 होगा. Total 200 marks होगा. 2.5 marks for correct answer. Wrong answer 1/3 of the marks are deducted. The questions are of objective type and the 66 marks are qualifying. So this is duration of paper 2 hours.
So this is how CSAT is planned. Next is CSAT का जो syllabus है, we need to understand the syllabus of CSAT to understand how to go about preparing the particular exam, this particular paper. तो CSAT का जो syllabus है, primarily हमने 3 जगह categorize किया हुआ है इसे. There is when you will go if you read the notification of UPSC for the UPSC exams, तो क्या होगा उसमें ऐसे तरह से categorization नहीं है syllabus का. This is what we have done for our own convenience. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें क्या क्वेश्चन होंगे? दिस इज प्राइमरीली मैथ्स अप टू 10th स्टैंडर्ड. इसमें सब कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो आपने मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है. द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इज नॉट वेरी हाई, बट येस यू नीड टू मास्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द थ्योरम्स, द फॉर्मूलाज. यू शुड बी कंफर्टेबल इन डीलिंग विद नंबर्स टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर पेपर, दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पेपर. Next is logical and analytical reasoning, general mental ability and the decision making. इसमें हमारे reasoning based questions आते हैं that we have categorized and we have combined them under this particular section. Third is reading comprehension. This is primarily English passages and the questions that follow. तो हमारे एक CSAT के पेपर में the GS2, the second paper of the GS prelims is CSAT. उसमें हमने ये 3 तरह के हमारे उसमें कैटेगराइजेशन हमने किया है. व्हाट विल बी द सिलेबस, व्हाट आर द वी हैव कैटेगराइज द सिलेबस इनटू दीज 3 सेक्शंस. इस सेक्शन में कौन से टॉपिक्स कवर होंगे दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. इन सिमिलरली इन दिस सेक्शन एंड इन दिस सेक्शन. देन वी विल गो ऑन व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी फॉलो टू मास्टर दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड सो ऑन फॉर अदर सेक्शंस एज वेल. अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें हमारे क्या टॉपिक्स मेजरली कवर होते हैं? बेसिकली जितना भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था उनको वंस यू गो थ्रू इट, सो व्हाट हैपेंस, यू गेट टू नो व्हाट ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन द CSAT पेपर. अभी तक हमारे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके हिसाब से दीज आर द पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट वी विल बी स्टडिंग इन दी क्वांट सेक्शन. दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? अप्रॉक्स 40 to 45 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस. और क्यों इंपॉर्टेंट है? This is the most scoring section of the aptitude of the CSAT paper. Why? Why scoring? If you are very comfortable in the formulas, the basic concepts, and you follow the correct steps to solve a particular question, the answer that you derive, you conclude, the answer is 100% accurate. If the formula applied is correct, the steps followed are correct, the answer will be 100% accurate. There is no ambiguity कि हो सकता है, probability is 0, गलत होने की probability is 0. So क्या होगा? Accurate है. If you devote 5 minutes on solving a particular question of quantitative aptitude maths and it is correct, so आपने you have directly scored 2.5 marks. Moreover, why it is important? The syllabus is very well defined. ये सारा आपको 10th स्टैंडर्ड NCERT और any RS अग्रवाल और any aptitude वाला जो बुक है, आपको सारे थ्योरम, सारे फॉर्मूला, द करेक्ट स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो इसमें मिल जाएंगे. एंड इट इज़ वेरी कॉन्क्रीट. बेसिकली द सिलेबस इज वेरी कॉन्क्रीट. नंबर सिस्टम में HCF, LCM, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सर्ड्स, इंडिसेस, लॉगरिथम्स, ये सारा कवर होगा. एवरेजेस A + B + C / 3 और n नंबर तक डिवाइड बाय n. तो हमारा सिमिलरली एवरेज वाले बेस्ड क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन्स, boats and streams. This is the speed of the stream, this is the speed of the boat, and all the questions related to this particular topic will be covered under this boats and streams topic. Time and work, 5 men complete work in particular time, in a particular time frame. How much time will be taken by 10 men if we employ 10 people, if we employ 2 people. Percentage based questions, profit loss, pipes and cisterns, ratio and proportion, mixture and alligation, permutation and combination and probability. This is a little tricky topic. Permutation, combination, probability. Many of the
students, aspirants who are not from the PCM, who have not completed their 12th class from PCM, physics, chemistry, maths, they will not be comfortable, they might not be comfortable in this topic, permutation, combination, probability. But the questions asked are very moderate, easy to moderate questions. इतना हम master कर लेंगे class में कि you will be able to solve the questions that are coming in the UPSC paper which are related to this topic. Data interpretation. The data is represented in various forms: line graphs, pie charts, bar graph, tabulation, and the questions are followed. हमारा एक डेटा है, इस तरह से रिप्रेजेंटेड है, उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू इंटरप्रेट द डेटा दैट हैज बीन presented to us and answer those particular questions. Next is problems on ages, age related problems. So this is the broad guidelines of the topics that are covered under this particular section. ये syllabus कैसे हमें आगे पढ़ना है, कैसे हम अपने जो previous years questions हैं उन्हें हम categorize करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ये मोटा आपको broader outline of the syllabus of the UPSC Civil Services Aptitude of Quantitative Aptitude. Next is logical reasoning. इसमें से approx आपको you will be getting 20 questions. We will analyze the questions asked in all the three topics. Later on in the later slides, I have categorized all the questions, all the 80 questions every year into these three topics. कितना topic हमारा, कितना 80 questions are divided among कितने questions किस topic से, इन 3 sections से आते हैं, so that we get a fair idea कहाँ पे हमें कितना time devote करना है, how to go about it. जो logical reasoning वाला part है, it is a very vague topic. ये हमारा थोड़ा मुश्किल पड़ता है, but the questions are again easy to moderate in this topic. क्यों easy पड़ता है? इसका कोई defined syllabus नहीं है. Reasoning, basically you need to apply the critical reasoning, decision making, you need to apply your decision making to arrive at a particular answer. But उसके बाद भी जो हमारा topics है broadly, ये particular topics will be covered in the CSAT question, in the CSAT lectures. जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग, फॉर एग्जाम्पल टीचर इज कोडेड एज एनीथिंग, सपोज टीचर इज कोडेड एज VGCET, and so how will children be coded as? Such type of problems are covered under coding decoding. Blood relation, A is related to B, B is related to C, C is related to D. How A is related to D? Such type of questions are covered under this particular topic. Seating arrangements, logical Venn diagram, A, B, A intersection B. Then is analytical reasoning, direction sense test. Such questions also come. Direction sense test is, we start from a particular point, move west, move north, move east, move north, move west, move south. Now in which particular direction you are from the starting point? Such questions are covered under direction sense test. Then is cubes and dices. Cube, how many cubes are there in this particular figure? Such questions come. Deriving conclusions from two particular statements. See, the one of the major questions that are asked are statement 1, statement 2. What is the conclusion? Question will be, what is the conclusion? Question will be, what are the arguments? Next is assumptions, underlying assumptions क्या हैं इस particular statement की, cause effect. इस तरह के variety questions you will be asked, given on the basis of the 2 or 3 or 4 statements that are presented in the form of question. Next is inserting the missing character. Figure series आएगी, number series, alphabet series, figure series, where you will be able to, you need to comprehend what is the missing character, what should be the next, what should be the next character in the particular series, be it number, alphabet or any of the figures. Eligibility test.
suppose you have the resume of 10 people, you need to shortlist it for one particular post where the eligibility criteria is C1, C2, C3, C4. इन 4 या 5 पैरामीटर्स पे you need to analyze the resume of every candidate, of every particular aspirant or a candidate who is applying for this particular post, and you need to figure out who is the best candidate, who is eligible, who should be selected or not selected. Then cause effect, situation reaction test, then is pie chart, number ranking, etc. बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा based on the experience of the previous year's questions. We need to categorize the syllabus, we need to cover all types of questions that are covered in the previous year questions. हमारे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन प्रकार का हमें we need to have a clear understanding of how to approach a particular question. Suppose seating arrangement का question आता है, तो what should be the step 1, what should be the step 2, what should be the step 3 and so on to arrive at the correct answer. It is very important. Why? Reasoning में क्या होगा, there are no formulas, there are no theorems. What is the primary role the primary factor in solving a question is the steps that need to follow. How will you approach a particular question? आपको वो question कैसे approach करना है, आप उसमें किस किस तरह से, how will you apply your mind, what should be the thinking pattern. That is all that matters in this particular paper. Basically इसमें हमारा what we will learn, what are the steps that needs to be followed, what are the different types of problems, what are the steps that need to be followed, and how will you categorize that problem, what should be the thinking pattern. कि आपको कोई सीरीज दिखी है तो हाउ शुड यू अप्रोच इट. सबसे पहले आप देखोगे उन दो का डिफरेंस कितना है, मल्टीप्लिकेशन है, कोई कॉमन फैक्टर है, वो उसका मल्टीपल है या सो ऑन. नेक्स्ट इज द थर्ड सेक्शन इज कॉम्प्रिहेंशन. उसमें व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, यू आर गिवन अ पैसेज, आपके पास पैसेज होगा, उसके बेस पे क्वेश्चंस फॉलो करेंगे. बेसिकली you will be able, you need to comprehend the passage, you need to understand the intent and the gist of the passage, what the passage is all about, what should be the question will be like, what should be the title of this particular passage, उस passage का जो आपका intent है, what is the theme of that particular passage, title क्या होगा, and other questions informative होंगे, जो information आपको passage में दी हुई है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड so on and so forth. Comprehension से approx you will be getting 15-20 questions out of 80, and इसका the basic important parameters or important factors that you need to master to master this particular section is vocabulary आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपकी grammar अच्छी होनी चाहिए. क्यों? vocabulary आपकी अच्छी होगी तो you will be able to understand, comprehend what is the gist, of the passage, what is the intent of the passage, what does the author want to convey through this particular passage. Basically you need to understand each and every word. कोई ऐसा word ना आ जाए जिसका आपको मतलब ही समझना है, so you will not be able to understand the gist, the intent, और आपका question गलत हो जाए. And the key is practice, practice and practice. Read as many books, as variety newspapers, different types of passages, practice them. You need to understand the passage, the intent, everything to solve these questions. Next is अभी तक के जो पेपर पूछे गए हैं, बेसिकली CSAT केम इन 2014, तब से अब तक व्हाट इज द डिफरेंट द क्वेश्चन दैट आर कैटेगराइज्ड इनटू दीज 3 डिफरेंट सेक्शंस, कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछे गए हैं. तो यू विल ऑब्जर्व पहले सिर्फ 15 थे, अभी रिसेंटली 43, 45, 35, 40. बेसिकली अभी फॉर द लास्ट 5 years क्वांट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से इंग्लिश
20-25 के अप्रॉक्स पूछे जा रहे हैं और रीजनिंग से कम पूछा जा रहा है. बट वी नीड टू मास्टर ईच एंड एवरी सेक्शन बिकॉज दिस पैटर्न कैन चेंज एनी डे. ऐसा भी हो सकता है कि कल को कॉम्प्रिहेंशन से यू आर आस्क्ड जस्ट 40 क्वेश्चंस, फ्रॉम हियर ओनली 15 क्वेश्चंस. So you need to master each and every section of this particular paper to be comfortable in this particular paper. Basically आपको यहाँ से 66 marks चाहिए and 100% चाहिए, otherwise nothing, everything goes in vain. The entire attempt is wasted without even attempting. तो इसलिए आपको you need to be comfortable in all the 3 sections. और किस तरह से हम comfortable होंगे? You need to understand the priority areas of each section, कहाँ पे आपको focus करना है, and अ प्रॉपर स्ट्रैटेजिक आपका स्टडी प्लान होना चाहिए. what should be the strategy that needs to be followed for CSAT? हमारा CSAT का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए तीनों सेक्शंस को मास्टर करने के लिए? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? सबसे पहले तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि 40-45 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं एंड इट इज मोस्ट स्कोरिंग. वाई स्कोरिंग? once you arrive at the correct answer, there is no ambiguity about it, there is no doubt about it, you followed the correct formulas, the correct theorems and arrived at this particular answer. तो ये 2.5 marks आपके उस particular answer के पक्के हैं. Here the strategy, what is the main strategy? Master the basics, understand and write down the formulas and the theorems. Basically you need to, on one sheet of paper or on whatever on a particular paper, you need to have all the theorems, all the formulas of the particular sections, जैसे कि averages है, time, speed, distance है, work है, volume, Pythagoras, geometry के जितने भी आपके formulas हैं, Pythagoras theorem है, they should be clearly mentioned in one piece of paper. You need to be very conversant with it, very comfortable with these theorems. Simplify the question. This is the next part. Break every question into various steps. How to approach a particular question, that is very important. And the most important part of this paper is accuracy with speed. हमें 2 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट मेक श्योर व्हाट यू सॉल्व, व्हाट यू अराइव एट, दैट हैज टू बी करेक्ट. एक्यूरेट आंसर होना चाहिए. इट इज नॉट दैट आप बहुत जल्दी ट्राई कर दो बट आंसर गलत है, या आपकी सिली मिस्टेक्स उसमें हो जाए. सो एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पेपर. Solve the questions as quickly as possible, but solving it with 100% accuracy is very important. Work on your basics. Try to practice as many questions as possible. Previous year questions are very important for CSAT. And हम अपने lecture में क्या include करेंगे? First we will start with one particular topic. Suppose हमने कोई topic start करा, average. All the basics, the concepts, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे. उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वी विल प्रैक्टिस देम इन क्लास विथ सम मोर एग्जाम्पल्स, एंड देन देयर विल बी अ मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट ऑन द टॉपिक्स कवर्ड इन वन पर्टिकुलर वीक. दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट नीड्स टू बी फॉलोड टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नेक्स्ट इज comprehension. I've already mentioned the grammar is very important, vocabulary is very important, intent and the gist of the passage need to be understood by the aspirant before answering the questions. Practice is the key in this particular section. Read newspapers, magazines, practice reading comprehension from the previous questions to gain confidence and speed. Here practice is very important. Next is the next is logical and decision making, logical reasoning and decision making. Logical reasoning is also very important. Why? 15 से 20 questions you will be getting from this. यहाँ पे the syllabus is very vague. The syllabus is prepared keeping in mind all the topics that have been covered in the previous questions. अभी तक जितना कुछ पूछा गया है वो सब हमने topics cover करे हैं. They are generally easy to moderate. You can solve the questions if you are aware of the types of questions. This is the key here. What all types of questions are asked in the exam? You need to be aware of those types of questions to score well. The key is to, again, the practice. The best strategy is to attempt the previous year questions. Why?
आपको पता चलेगा किस किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी सीसैट में आते हैं. नेक्स्ट इज हाउ विल द कोर्स हेल्प, व्हाई यू नीड टू टेक द क्लासेस ऑफ द सीसैट. क्यों? नंबर 1, क्वांट में क्या है, द बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. You should be pretty comfortable in solving any of the questions that are asked from all the 3 topics. Quant, very important, 40 to 45 questions are asked from that particular topic. Second is reasoning. You need to be aware of what all types of reasoning, the syllabus is very vague. You need to be aware of what all types of questions are asked, कौन से topics आपको cover करने हैं, and how to approach every problem. Every problem is a new problem in reasoning and decision making. That will be total. Novel problems are asked. Novelty is it is the quality of reasoning. Every question will be a different question. आपको पता होना चाहिए उसे कैसे अप्रोच करना है, what all steps need to be followed. उसका कोई आपको कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरम, कोई सेट तरीका नहीं है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का. बट येस, हाउ यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, कैसे आपका थॉट प्रोसेस ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए टू सिंप्लीफाई दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. दिस ऑल विल बी कवर्ड इन द लेक्चर. कॉम्प्रिहेंशन में द एंटायर सिलेबस, सी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, द सिलेबस इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड. अ टीचर नोज बेटर बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चंस व्हाट आर द प्रायोरिटी एरियाज. हमारे पास कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट ऑल द कॉन्सेप्ट्स कवर टू, जो आपका सिलेबस है उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और आपका मॉक टेस्ट. इट इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान दैट वी विल बी फॉलोइंग वाइल taking the classes, so that you are comfortable in CSAT question paper in the prelims. That's it. So thank you so much.